back once again to your favorite channel, that is Lukmaan IAS Academy, turning your dreams into reality. And for this very single motto, for this very single slogan, we have come forward today in this Tucker Perspective hot topic for the day. And this topic is with regard to the ongoing issue, with regard to the encounter, the direct or indirect encounter that took place inside the state of Uttar Pradesh. सो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? हम सब जानते हैं कि किस तरीके से इन द मंथ ऑफ मार्च वी हैव सीन एन ओपन फायरिंग इन द सिटी ऑफ प्रयागराज इन द स्टेट ऑफ यूपी, राइट? सो अब इस फायरिंग में हमने क्या देखा कि देयर वाज अ विटनेस नोन एज अमरपाल सिंह हु वाज किल्ड. Allegedly, he was killed by, at that time, the gangsters from the Atiq Ahmed gang. सो अतीक अहमद जो कि उस टाइम गुजरात के एक जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये मर्डर ओपन फायरिंग दिन दहाड़े ये जो फायरिंग हुई थी, ये अतीक अहमद के बेटे अशरफ और इनके कुछ साथी ने मिलकर, यानी कि कुछ सो कॉल्ड गैंगस्टर्स ने मिलकर इस फायरिंग को अंजाम दिया. अब उसके बाद ऑब्वियसली यूपी पुलिस पूरी तरीके से एक एक्टिव पूरा जो है सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एक एक्टिव परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया, और जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके जितने भी नाम इन्वॉल्व थे इस पर्टिकुलर केस के अंदर, इस ओपन फायरिंग केस के अंदर, यहाँ पर ओपन फायरिंग एंड मर्डर केस के अंदर सभी लोगों को बहुत जल्द से जल्द यूपी पुलिस ने एक बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रॉन्ग एक्शन रिप्रेजेंट करते हुए सबको पकड़ा. और हमने देखा कि किस तरीके से अशरफ का एनकाउंटर किया खुद यूपी पुलिस ने. ओके, और ये सही था, गलत था, whatever it was, okay, honestly speaking, personally speaking, it's something which was at that time needed. But yes, obviously it is a big dilemma, big question of law and ethics, law versus ethics. तो अगर perspective of law की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक question mark बनेगा yes or no को. अगर हम ethics की बात करें, so sometimes it is important to have violence in order to safeguard the life and property of the other people. राइट, कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए शांति खुद ही भंग करनी पड़ती है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द फर्दर ऑफ द फैक्ट्स व्हाट वी गॉट. जस्ट a week back, what we have seen that how Atiq Ahmed, the alleged gangster, the former member of parliament as well and the state legislative assembly member as well from the state of UP only, he is involved in a number of criminal activities and number of cases are registered against him, and for which he is also undergoing the trial and also imprisoned. So अभी हमने देखा कि किस तरीके से अतीक अहमद को उठाकर ले जाया जा रहा था एक मेडिकल टेस्ट के लिए. वहां पर अचानक से दो लोग आते हैं disguised as the press reporters and they opened up the fire. They opened up firing on Atiq Ahmed and his brother, and because of which Atiq and his brother, both of them, they died on the spot. चलो, ये तो एक न्यूज है, इसका यूपीएससी से क्या लेना देना. अगर हम उस पर बात करें तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट, आई विल से वंस अगेन, इस एक न्यूज का, इस एक पर्टिकुलर इवेंट का हमारे एथिक्स पेपर 4 से डायरेक्ट कनेक्शन है. इट इज वंस अगेन न्यूज़पेपर्स के अंदर आए दिन यहाँ पर एक कहानी छप रही है, एनकाउंटर्स वर्सेस रूल ऑफ लॉ, जिसे हमने अपने डीसीए सेशन के अंदर भी डिस्कस किया है कि क्या एनकाउंटर करना सही है, क्या एनकाउंटर लीगली एक प्रोविजन है, क्या एनकाउंटर्स एक लीगली एक मैकेनिज्म, एक मशीनरी है इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए और क्रिमिनल से डील करने के लिए. तो अगर हम बात करें इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, हमारी कंट्री की, तो इंडिया में एनकाउंटर्स को सपोर्ट करने वाला कोई भी एक ऐसा स्टैट्यूट, कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर लॉ नहीं बना है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, हमारे जो आईपीसी है वो ये बताता है कि इन केस ऑफ सेल्फ डिफेंस, इन केस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, इन केस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द masses as well as the nation, if it comes important, if it is seems important, if it is seems necessary, then in that case the authorities, the armed soldiers, they have got the authority to open up the fire, but obviously not because, okay, not until and unless they have taken up the prior permission from their senior officials, right? So अतीक अहमद का जो केस है, इस पर यूपी गवर्नमेंट के ऊपर जो है उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि क्या इसमें गवर्नमेंट का इंटरनल कोई साठगांठ था, क्या इसमें गवर्नमेंट की इंटरनल कोई कॉन्स्पिरेसी थी ऐसा कराने के लिए. तो टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बातों पर मत जाएं, मीडिया रिपोर्ट्स पर मत जाएं, असलियत पर जाएं. देखिए, एज सच कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती,
सिंपल शब्दों में, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है. नो गवर्नमेंट इज देयर हु इज गोइंग टू परफॉर्म सच चाइल्डिश एक्टिविटीज. एंड खास तौर पे आप बात करते हो इंडिया की और इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स की, सो ऑब्वियसली देयर इज रूल ऑफ लॉ एग्जिस्टिंग. दिस इज द सिंपल केस ऑफ द गैंग वॉर. हाँ, ऑब्वियसली मीडिया पर्सन बनकर कोई डिस्गाइज होकर आया है, तो अब उसको रोका जाए तो कैसे रोका जाए हमें नहीं पता होता है. ना ही इतना ओपनली हम हर किसी की चेकिंग कर सकते हैं, राइट? सो अब ऐसे में कोई गन लेकर आता है जिसका इंटेंशन ही है गोली मारना, तो उसने मार दिया. एक सिंपल सी कहानी यहाँ पर बनती है. लेकिन अब ऐसे में सरकार के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि ये यूपी सरकार ने करवाया है, ये योगी सरकार ने करवाया है. तो देखिए, ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत कहानी है. ओके, इसमें सरकार का कोई भी नहीं. देखिए, इसे एनकाउंटर कहना भी सही नहीं, बिकॉज इसमें कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्व नहीं है. इसमें ऑलरेडी ये जो दो लोगों ने मारा है, ये पहले से ही गैंगस्टर है. इसमें सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है. ओके, सो इसे एनकाउंटर भी नहीं कहा जा सकता. यस, हाँ, ये हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यू पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है, नो डाउट इन दैट, कि ऐसे कैसे दिन दहाड़े फायरिंग कर सकते हैं. लेकिन अगर सच्चाई बात करें तो फिर अमरपाल सिंह को भी तो दिन दहाड़े मारा गया था. सिर्फ गोली ही नहीं चलाई गई थी, वहां तो एक बॉम्ब भी फोड़ा गया था, जिसमें अमरपाल सिंह, जो कि एक विटनेस था एक केस में अतीक अहमद के खिलाफ या उसके परिवार के खिलाफ, जिसमें अमरपाल सिंह तो मारा गया. लेकिन अगर उस बॉम्ब ब्लास्ट की हम बात करें तो थैंकफुली इसमें कोई और नहीं मारा गया. लेकिन अगर इसमें किसी और जनता, किसी और सिविलियन की जान चली जाती तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो ऐसे में यहाँ कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाता है द रूल ऑफ लॉ. एज वी हैव गॉट आर्टिकल 14 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी गॉट द नेम एडवर्ड जेम्स कोक, एंड वी हैव गॉट Sir A.V. Dicey, who came up with the concept of, who propounded with the concept of the rule of law. What it has is been stated, according to the rule of law concept, that rule or the law is supreme. No one, I repeat, no one is above and over the law, and every person who is residing inside the supreme land of law will have to, whether willingly or unwillingly, adhere to the principles and the provisions that are inscribed or that are written inside the law. Okay, and what the law says, that it is the duty of the state to safeguard, once again it is the duty of the state, the whole nation, the government, to safeguard the life and property of the masses. ओके, जान और माल की पूरी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी ये राज्य यानी कि सरकार के हाथों होती है. अब ऐसे में दिन दहाड़े फायरिंग होने की वजह से ऑब्वियसली जनता में डर बैठ जाता है. ऑब्वियसली इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सवाल उठ जाते हैं जो लोगों को लगने लगता है कि क्या हम सेफ हैं. लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें तो ऑब्वियसली वी ऑल आर सेफ. ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक न्यूसेंस भरी जगह पे रह रहे हैं या एक न्यूसेंस फैला हुआ है पूरे मुल्क के अंदर. नहीं, एज एब्सोल्युटली इट इज नॉट द केस. ओके, I can assure you that, as with regard to discussing the law, we know it very well that we talk about the Siachen, we got the soldiers protecting us there. You talk about the borders of Gujarat, Rajasthan, we got the superhero soldiers protecting us there. You talk about the hilly terrain regions of the northeast, from where we can see that how easily the Chinese and the Bangladeshi infiltrators can enter India. But for them also, in their very wonderful, beautiful northeast of our India, we have got another company of super soldiers. We Indian super soldiers, we call them as the Indian Army, military, Air Force, okay, or the Navy. ओके, तो ये सब मौजूद है वहां पर हमारी सुरक्षा के लिए. और बॉर्डर्स के अलावा इंटरनल रीजन्स में हमारी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी हमारे पास है और साथ ही साथ हमारे पुलिस फोर्सेस हमारे साथ हैं हमें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए. ओके, तो ऐसे में कहीं पे भी खौफ या डरने जैसी कोई भी बात नहीं है, बिकॉज वी आर सेफगार्ड बाय द गवर्नमेंट. यस, एंड वी आर ऑल्सो सेफगार्डेड बाय द वर्दीधारी, द यूनिफॉर्म वेयरर्स, द खाकी वेयरर्स, वो जिन्होंने खाकी पहनी है, जिन्होंने कसम खाई है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के नागरिकों की सुरक्षा करेंगे. तो ऐसे में डर का माहौल भले बन गया हो, लेकिन हाँ, डरने की सच्चाई में कोई भी आवश्यकता नहीं है. और अगर हम कहानी की शुरुआत करें, रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें वापस से, सो वंस अगेन इट इज क्लियरली रिटन इन आवर आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ. एंड यस,
Okay, explicitly it implies that there shall be the rule of law where the law is supreme in this land, first of all, and secondly, no one is above the law. That means law shall be safeguarded at any cost. And thirdly, what comes to the most important arena here, that is, in order to safeguard the life of the people, the Indian Penal Code, that is the IPC itself, empowers within section 41 and 42 of the IPC we talk about, it empowers the police forces to take up the strong and stringent actions against any ill element of the society or any nuisance element of the society. And once again, with regard to the news, with regard to the encounter of Atiq Ahmed and his brother, so there is no authority involved, there is no government conspiracy. Government क्यों conspiracy करेगी? Come on, please, it's government. If they want to do it, they can do it openly with the opinion of the public. And if they do anything wrong, then obviously they know it very well. There is judicial system, independent and a very strong judicial system we have got in our country. So they know it very well that they do not need to do such childish activities. If they want to do it, they may do it from the front. But the case here, what we are discussing, is not the case of the government. You shall not raise up the fingers on the government. And the next thing, the very important thing here, that is, it was the case of the two gang wars. Okay, it was the case of the gang war, the war between the two indifferent gangs, two different gangs, right? So guys, with regard to the rule of law, we have come to the conclusion here again that they are maintaining the rule of law. We are supervised by the rule of law, and nothing, I repeat, nothing is going to trouble you and your life until and unless you have breached the law or violated any kind of law. Okay guys, so I hope I am clear. सारे मीडिया रिपोर्ट्स पर मत जाएं, इन्होंने करवाया, एक्सपर्ट पैनल बैठा रहे हैं, ब्ला ब्ला, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं. ध्यान रखें, बेवजह की चीजों से खुद को दूर रखें. पेपर 4 एथिक्स को ध्यान रखें, पेपर 2 गवर्नेंस को ध्यान रखें. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये, जिसको आपके सामने अभी रिप्रेजेंट किया गया है इन एज मच एज शॉर्टर टाइम एज वी कैन. सो गाइस, दैट्स इट विद दिस सेशन. आई होप यू लाइक्ड इट. ओके, और अगर लाइक किया है सही में तो प्लीज वो लाइक का बटन जरूर दबा दें. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, and do not forget to provide your valuable feedback into the comment box. Okay guys, so that's it. See you all soon. Bye bye, take care, study well, and yes, Jai Hind as always.